Machephy Eduworld. Good evening, students. So last time हम dynamics of circular motion, that is how force causes circular motion, that is what we were studying, and we're going to continue with that topic with some more questions. So to relate the forces with the circular motion, let us say there is some force which is causing circular motion. So a part of that force should be responsible for centripetal acceleration. And we can write that part of force as mv square by r, and that force can be called centripetal force. That net force which is responsible for circular motion is called the centripetal force. And as we all know, centripetal acceleration is v square by r. So F is mv square by r. And the force which is responsible for this centripetal acceleration is known as centripetal force. So last time we already saw an application of this, and that was banking of road. And before banking, whenever an object goes in circular motion, we need a net force which is towards the center. So if you have solved this, you must be getting answer just the plus and minus sign are reversed. Just the plus and minus sign are reversed here. If minus will be in the numerator and plus sign will be in the denominator. That is for the case of minimum friction. All right. So in dynamics of circular motion, any object which is traveling in circular motion can have force which is towards the radius and force which is perpendicular to the radius. All right. So in banking of road, we have seen that it is a case of circular motion in which we have only the centripetal force, no other force. But let us suppose we have a pendulum which is hanging on a bob which is hanging on a swing, and let us say currently it is making an angle theta. It is making an angle theta. So right now, the speed at this point is 0. Okay, at this point A, let us say the speed is 0. Speed is 0. So if you draw the FBD at this point, FBD at A, so the downward force will be mg. The tension force is T. Achha, tension force can adjust. Tension force is a response, so it can adjust. It's the downward force mg. And there are only two forces acting on it, but there is no speed of the particle. Pendulum bob का कोई speed नहीं है, बस यहाँ theta is equal to A से release किया. This angle is theta, and then we have just released it. You know the motion, how it goes. Everybody has seen it, and you can imagine it. It will go along a circular path because it is constrained to do so. सिर्फ इस circle के along ही move कर सकता है. That will be the radius of its trajectory. Let us say the length is L. It will come useful later. So one thing we know कि अभी इस direction में अगर forces की component ले, तो net force should be responsible for the centripetal acceleration. So इस direction में forces की component लेते हैं. अगर ये vertical है और ये length के along है, so this angle should also be theta. Okay, because this two are parallel, and this and theta, this is theta, so this angle is theta. So mg के दो component ले लेते हैं. This will be mg cos theta, and this will be mg sin theta. So अब दो direction में forces को देख रहे हैं. One along the length. So along the length, if we draw the free body diagram, so along the length, it should be T minus
mg cos theta, that is mv square by L. But this is 0. This is 0 because speed abhi 0 hai. Abhi just motion start hua hai. So from here you can just write tension is equal to mg cos theta. Tension is equal to mg cos theta. और इस डायरेक्शन में फोर्स को देखें, so mg sin theta will be responsible for acceleration. That is perpendicular to the length of the string. Perpendicular to the length of string. So इसको हम बोलेंगे centripetal या radial direction, और this is tangential direction. Tangential direction. So mg sin theta जिस acceleration के लिए responsible होता है उसको हम बोलेंगे tangential acceleration. Okay, and ये वही tangential acceleration है जो speed के लिए responsible. So tangential acceleration here is g sin theta, and as you know, the tangential acceleration will be responsible for the rate of change of speed. The rate of change of speed. मैं सिर्फ dv by dt भी लिख सकता हूँ, but we are used to this, accustomed to this. I'll write d mod of v by dt. So what is happening here? There is no speed. It is just starting its motion. अभी just इसको यहाँ से release किया है. So I will write pendulum released from point A. Just point A से release किया. कोई speed नहीं है, इसलिए कोई भी centripetal force नहीं है. Because the speed, centripetal force depends on the speed. Okay. So tension is coming as mg cos theta. अभी के लिए और tangential acceleration है. So tangential acceleration थोड़ी देर बाद speed को बढ़ा देगी. थोड़ी देर बाद speed बढ़ जाएगा. अच्छा, suppose अभी after some time the particle is at point B. Particle point B पे आ गया, और जब particle point B पे आया तो उसके पास कुछ speed है. Let me call that speed to be v. Particle यहाँ पे पहुंचा तो speed हो गया v. Let me call that angle to be alpha, or you can call it theta dash if you want to. तो थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ जाएगी, फिर से एफबीडी बनाएंगे, तो एफबीडी का जो अरेंजमेंट होगा वो तो वैसा ही रहेगा, only it will be like this. So when particle is in motion at point B, so लेंथ के along टेंशन हमेशा लगेगा लेंथ के along. टेंशन की एक खास प्रॉपर्टी कि हमेशा लेंथ के along लगता है. mg is downwards. Again we can take the component, but इस बार एक acceleration है जो सेंटर की तरफ है, because there is a speed. And दूसरा acceleration होगा that will be perpendicular to this rope. So ये वाला angle 90 degree हो जाएगा. And this angle is alpha. I can take the components again. mg cos alpha, mg sin alpha. अच्छा, टेंशन के along component क्यों ले रहे हैं? Because टेंशन के along ही centripetal force होगा, centripetal acceleration. So along this direction there will be centripetal acceleration, और इसके perpendicular आएगा tangential acceleration. So write the forces. So here it will be tension, है ना? Tension वाला force की direction में acceleration आएगा. So T minus mg cos alpha, that is mv square by L. mv square by L. ये zero नहीं है इस बार. We can call it maybe vb, speed at b. So mvb square by L. तो अगर टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो इट इज mg cos alpha plus mvb square by L. mvb square by L. तो सी वेलोसिटी की वजह से टेंशन बढ़ गया. सो अगर रोप पेंडुलम बॉब में स्पीड जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा टेंशन बढ़ता जाएगा. टेंशन डिपेंड्स ऑन द स्पीड, और ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन अल्फा, बट मोर ऑन द स्पीड. एंड दूसरे डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में, इफ आई राइट द फोर्सेस mg sin अल्फा ही लग रहे हैं, एंड mg sin अल्फा इज रिस्पांसिबल फॉर योर
tangential acceleration. So tangential acceleration is g sine alpha. G sine alpha, and this will be your dv by dt, rate of change of speed. So tangential acceleration speed बढ़ाने के काम आता है, और centripetal acceleration, it increases the tension. All students are here. That's really good. Aditi and Rashmi, we had exams. All right. So that is the arrangement. Acha, note this down. And iske baad, suppose I will take another point. I'll take another point. Suppose your is the same pendulum. Usko point A से drop किया था. Point A से drop करने के बाद, currently it is at this point. Call it point C. Call it point C, and it is horizontal, vertical. Sorry, it is vertical. So find tension and find tension, centripetal acceleration, and tangential acceleration. All these three you have to find. It is given that the speed here is vc. अच्छा, speed कैसे find out करते हैं, that will be learning in the chapter work for energy. अभी के लिए let us assume that the speed is just okay. So okay, first note this down quickly, and उसके बाद find out करना है जब vertical हो जाए. सर्कुलर मोशन ऐसा चैप्टर है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. सो न्यूटन्स लॉ में मिला के, वर्क फॉर एनर्जी में मिला के, रोटेशनल मोशन में मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं जेईई मेंस में, इवन फॉर जेईई एडवांस्ड. बेसिक कंसेप्ट्स इसमें सिर्फ काइनेमेटिक्स में था ना, 3 इक्वेशंस, 3 डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूटन्स के 3 लॉस थे. उन्हीं दोनों कंबाइन करके अभी तक जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं. So writing equations for this physics is really easy. So people have worked out hard, scientists have worked hard to write down the equations. Challenge come to interpret those equations, to apply those in day-to-day life. And the challenge is to apply the mathematics. So keep your mathematics strong. That will help you in physics. Especially for those students who बाद में भी physics or math पढ़ने वाले हैं. Of course, all of you, if you're doing BTech, then keep your maths and physics strong. Really help you. Even if you're going for computer science, it will help you a lot. And physics is the study of the natural phenomena, है ना? और maths में हम worry नहीं करते कि कहाँ पे लगने वाला है, कहाँ पे नहीं लगने वाला है. अच्छा, ये theory निकाल दी, फिर यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं. We just go in all the directions. There is a possibility that happens in mathematics. Now in physics, we take those study of simple phenomena like a parabolic motion, motion in 3 dimensions, and we have a single equation now, F is equal to ma. पूरा parabolic motion, F is equal to ma, और जो 3 differential relation है इसके काइनेमेटिक्स के, इन दोनों को यूज करके फिर बाकी पूरी मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, अलजेब्रा यूज करके हम फिगर आउट कर लेते हैं. सो मैथ्स कहाँ पे यूजफुल होने वाली है, that is very essential. So मैथ्स पे बड़ा फोकस रखना है अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है. सर
हाँ निर्मित। सर वो बुकलेट में थोड़े डाउट्स है वार्म अप एक्सरसाइज में न्यूटन्स लॉ मोशन। ओके, तो आज तो अभी 5 तक तो क्लास ही रखेंगे। क्लास ऑन वेंसडे आई विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम 2 and maybe we can keep up to 5 to 5:30. तो उस दिन डिस्कस करते हैं। ओके सर। ये नोट डाउन हो गया? नो सर। ठीक है। So I'll be turning the page now. Is that okay? Okay, so इसके लिए calculate करना है tension, centripetal acceleration and tangential acceleration. Of course, the mass is given as m. Mass of the bob is m. Vishwagar, can you tell me the tension in this case? सर 1 minute. Vishwagar का 1 minute बहुत लंबा होता है। मैं wait Vishwagar। और सर अच्छा, let's draw the FBD together. Tell me क्या क्या forces लग रहे हैं इस पे? सर ग्रेविटी Gravity कितना होता है gravity वाला force? Vishwagar, सर 6.67 6.67 into 10 raised to -11 -11. ये क्या है? सर ग्रेविटी Gravity है। No, Vishwagar, that is the gravitational constant. Gravity वाला सर force 9.8 9.8 is the acceleration due to gravity. We want the force due to G, force due to gravity. FVD में ड्रॉ करते हैं तो ये एरो के नीचे कितना फोर्स लिखता है? पिछले वाले FVD में देख सकते हैं, वहां पे भी लिखा होगा हाँ सर कितना फोर्स लिखा है। विशाग्र फिजिक्स पढ़ने में कम मन लगता है क्या? सर यस सर बोला क्या? सर नहीं बोला अच्छा नहीं यार, इतना तो मतलब 2 महीने हो गए पढ़ते हुए, कितना फोर्स लगाते हैं यहाँ पे। कमान फिजिक्स पढ़ने में कम मन लगता है ना? सर एक्चुअली मॉम ने बुलाया था इसलिए मैं था नहीं आ रहा। 2 महीने से? नहीं नहीं सर अभी 2 मिनट से रह गया। अरे तो सिर्फ फोर्स कितना लग रहा है उतना ही पूछा मैंने। अच्छा आदित्य, यू टेल मी द फोर्सेस ऑन द FPD. हाँ सर, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा Yeah, और नीचे ग्रेविटी yeah, that is which we mg. can mg, हाँ, Okay. mass into acceleration, or this g is acceleration due to gravity. Correct. And centripetal acceleration किधर लगेगा? Centripetal acceleration सर एक मिनट, हाँ सर, it will be towards the right side. No, you get. I was just confusing you. See,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा लगता है सर्कल के सेंटर की तरफ, हाँ है सर. ना? Okay, so it will be The towards the centripetal force is towards the center. centripetal So acceleration acceleration will. Yeah. हाँ. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा क्या? Tangential. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता तो किधर होता? Sir, tangential acceleration would. ये सर्कल है हमारा, तो सर्कल के टेंजेंट होना चाहिए, हाँ. पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है. हाँ सर. So in this case एक कंपोनेंट आ रहा था इन दोनों केस में, mg sin अल्फा mg sin थीटा, दोनों टेंशन वाले फोर्स के परपेंडिकुलर थे, मतलब सर्कल के टेंजेंट थे. टेंजेंट इज अलोंग द रेडियस, सॉरी द टेंशन फोर्स इज अलोंग द रेडियस, बट यहाँ पे देयर इज नो टेंशन वाला फोर्स. सो सीधा का सीधा tangential acceleration is it. That is what we can, because there is no force along the tangent. Okay, what is the equation that you will write for this acceleration? Net force equal to mass into acceleration. What should be right? सर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे ना, mg sin थीटा. अरे सी कंपोनेंट तो तब लेते जब सी मैंने बोला सर्कुलर मोशन में दो डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने हैं, रेडियस के अलोंग, ये तो रेडियस हो गया अपना, रेडियस के अलोंग और रेडियस के परपेंडिकुलर. तो कंपोनेंट तो मतलब ये वाला टेंशन तो ऑलरेडी रेडियस के अलोंग है ना? हाँ सर. कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं, अगर लिया भी कंपोनेंट तो t cos 90 आ जाएगा. t cos 90 तो जीरो होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट की वैल्यू नहीं होती. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में नेट T फोर्स is equals to mg. T is equal to mg. अरे एक्सेलरेशन भी तो है. हाँ सर वो भी है. हाँ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा न्यूटन्स लॉ है. F is equals to m. हाँ, नेट फोर्स कितना है इसमें? हाँ T माइनस mg ना, T minus m. और एक्सेलरेशन कितना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका लेंथ MAC. MAC. So we can write tension minus mg is equal to mb square by n. So velocity की वजह से centripetal acceleration है, that you can see here. Because there is velocity, because there is speed, there is centripetal acceleration. And यहाँ पे bottom most पे tension की value maximum होती है, क्योंकि कोई cos alpha sin alpha component नहीं होता यहाँ पे. If you have left a pendulum bob from A, तो tension बढ़ता जाता है, फिर bottom most पे maximum होता है tension. Because bottom most पे speed ज्यादा होती है. Why is that? That will be learning in work power energy, but you can use common sense. कोई चीज ऊपर से नीचे जा रही है तो potential energy कम हो रही है तो kinetic energy बढ़ेगी. You can also think like that. So this is your equation. And tangential acceleration zero था because there is no force in the horizontal direction. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Any confusion in this? कुशाग्र ये समझ में आया हो? सर मुझे लगा वैल्यू पूछ रहे थे mg. वैल्यू तो नहीं पूछ रहे थे. Okay. Let us go to the next stage. Okay, let us do one more question. So we have this case, this is called conical pendulum, and we can make a pendulum from a cone, sorry, cone shaped from a pendulum. So बॉब को सिर्फ डायरेक्टली रिलीज ना करें, इसको yes, you can do this at home. पंखे से एक रोप में कुछ बांध दिया and you can get a conical pendulum. You can, so the bob is going along this path. ऊपर नीचे नहीं है, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. Let us say string का length L है, and the angle that it makes with the vertical, that is alpha.
Okay, बॉब का मास m है, so this is called a conical pendulum, और conical pendulum just goes like this, and इसका speed जो होगा, velocity जो होगा, let us say right now the speed is v and it is going perpendicular to the circle, tangential to the circle. So I'll draw the FPD. So FPD will look something like this. You have a tension force, have mg in the downward direction, and speed is of course perpendicular. So centripetal acceleration किधर लगेगा? Circle के center के. Centripetal acceleration is towards the center, and net force along that direction is responsible for the circular motion. Okay, so this angle was alpha, so this angle is alpha. So this angle becomes alpha. I can take two components of the forces. This will be T sine alpha. This will be T cos alpha. So इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगा, जो भी मोशन होगा वो इस डायरेक्शन. So find the centripetal acceleration, find the tension. Find tension, find centripetal acceleration, find tangential acceleration. Bharvi, tell me the value of tension. T square upon L sine alpha. Okay. And Tangential लगेगा इसमें. tangential नहीं लगेगा. There is no force along the tangent. And tangent वाला direction इधर आएगा. It will be here along. So there will be no tangential force. So T sin alpha की वजह से there is centripetal acceleration. So mv square by r. Radius कितना हो जाएगा? Bharvi, the radius is? नहीं. L sin alpha हो जाएगा. See, ये एक right angle triangle है. ये L है तो L sin alpha हो जाएगा radius. So mv square by r को हम लिख सकते हैं L sin alpha. So tension, as you said, will be mv square by L sin square alpha. Centripetal acceleration कितना हो जाएगा? Tangential to 0. V square by L sine alpha. V square by L sin square alpha. L sin alpha. And see, vertical direction में there is equilibrium, है ना? इस direction में move ही नहीं कर रहे. So we can write just T cos alpha is equal to mg. और यहाँ से टेंशन का एक और रिलेशन निकाल सकते हैं. T is equal to mg by cos alpha. T is equal to mg by cos alpha. Right.